quick succession after that meeting to follow up on the discussions, the very fruitful discussions between the two leaders. And we have had a productive series of meetings already with our counterparts, with our colleagues. We have also had the honor of meeting His Excellency the President and the Prime Minister. And during all of these meetings, we stressed the importance and the strategic depth of this relationship. We stressed the commitment of the Kingdom of Saudi Arabia to further exploring avenues to deepen and strengthen that relationship, and we heard a similar commitment from our colleagues on the Pakistani side. We were extremely impressed by the very, very proactive attitude that we saw in our meetings, especially with the Investment Council. We saw a very, very strong business-focused approach on addressing the challenges, addressing the opportunities, highlighting the work that we can do together, and I feel very, very confident that the results of this visit and the results of the work being done between the two respective teams with this attitude, with this approach of focus on results, focus on overcoming hurdles, will deliver significant benefits for both of our countries, will significantly accelerate the process of achieving those investments that we are looking at together. And I can say that there is significant opportunity to increase the level of investment that is already on the table, and we saw today significant other opportunities that we can pursue. So I think this is a very, very positive visit from our perspective at least, and the engagement that we have had so far lays the groundwork for significant and important work to be done in the next few months in order to achieve all of the potential that exists. And we believe in the Kingdom of Saudi Arabia very strongly in the potential that Pakistan holds, especially in the economic development side. There is a lot of untapped potential that is clear to everyone. It just needs to be tapped, and here, working together, we will do what we can with our colleagues in the government of Pakistan to make that happen. So again, very, very grateful for all of the hard work that went into making this visit happen, and the support we've gotten from our Pakistani colleagues, the insights into these excellent opportunities, into the excellent investments that could potentially come forward. I'm also grateful for the conversation that I just had with my colleague, the Foreign Minister, where we covered all of the areas of mutual and concern in regional and international affairs. And as usual, Pakistan and the Kingdom of Saudi Arabia see eye to eye. We have an outlook that is unified by our fraternal relationship, our brotherhood in Islam, but also by our shared outlook for geopolitics. So we will continue to work together for our economic prosperity, but also for the security of our region and of the world. And I'm always happy when I'm able to be here, Your Excellency. So thank you again for receiving us. Okay, we'll now start the Q&A session. The first question will be asked by the representative of Saudi Press Agency, Mr. Abdur Rahman Hayat. He will address the question to the Foreign Minister of Pakistan. Sir, Abdur Rahman Hayat from Saudi Press Agency. My question, the leadership of Pakistan and Saudi Arabia have agreed to upgrade the long-lasting Pak-Saudi relationship to a lasting strategic and economic partnership. What step is Pakistan taking to invite investment from Saudi Arabia, and how does Special Investment Facilitation Council support this process? Thank you. Highness, you have a... thank you. Let me, my friend, explain to you that last 16 months of the government, which ended August 9th, 2023, we had created two things, if you recall, both through Act of Parliament. One was the creation of a small investment facilitation council. It is through an Act of Parliament, and it has been placed in the overall law for Board of Investment to promote and to attract investment in Pakistan. Now, this is a one-window facilitation, institution. So people and the foreign investors, particularly
government-to-government investment should, people involved, and the dignitaries involved should not go pillar to post, and couple of dozens permissions and NOCs, they should be all available under one window and under one, facilitation arrangement. We also created, if you recall, Pakistan Sovereign Wealth Fund, before we left government in August 2023, and that was again through an act of parliament. On the law itself, you can see that this sovereign wealth fund has an initial investment portfolio of $9 billion equivalent. It may have been by the boost of the stock change now, it might have added more value, but at the time of launch, it was 2.3 trillion rupees, worth of assets with this. Now we are looking towards expanding through SIFC and using this vehicle. For example, we have very rich history in agriculture. We have a great scope in IT. We have mines and minerals worth of over $10 trillion against Pakistan total debt of 130 billion peanuts of dollars, total national debt and liabilities. So we have to streamline those assets and use this vehicle. So we have different opportunity. Depends on the appetite of the investor. For example, our dear delegation and led by my dear brother, Foreign Minister of Kingdom of Saudi Arabia, we have given a lot of big menu which covers the energy, IT, agriculture, mines and minerals, your hydro dams, your solar, you name it, it's there. So obviously it is there. They would reflect it, they would go through it, they will go back home, they will discuss with the relevant departments, and obviously inshallah we will have. So we have to actually use the SIFC, because your question was SIFC and Saudi Arabia. We have fraternal ties, we have a rich background, we have been seen together on all international forums on the common approach to multilateral at the multilateral forums. So this has already a very rich relationship between the two brotherly countries. Now we are trying to, and with the help of my dear brother, His Highness the Foreign Minister of Kingdom of Saudi Arabia, what we are aiming at, in accordance with the vision of Prime Minister Shahbaz Sharif, to convert this, upscale this relationship and convert it into a viable strategic and economic partnership, so that we both can benefit. So we have about 2.8 million diaspora in Saudi Arabia. They are hosting. I just thank my brother for being a great host, and they are 28% of our Pakistani expats abroad. So we have a huge agenda to work with, and Pakistan is a great potential. I was telling my brother that I'm born optimist, because this country, which was declared macroeconomic unstable country in 2013, turned out to be within 3 to 4 years, 24th global economy of the world, with the prediction by the Pricewaterhouse that it will be part of G20 within the next few years. So this is the potential of Pakistan. We are trying to streamline, and for that we are looking towards experience and the expertise and the support from our very dearly brotherly country and its leadership. Now I will give the floor to Mr. Shokat Piracha of Aaj News. Thank you very much. Very warm welcome, Highness, the Foreign Minister of Kingdom of Saudi Arabia. As Foreign Minister of Pakistan has rightly said that we never seen such a big delegation from Saudi Arabia, and obviously appreciation for His Excellency the Ambassador Nawaf bin Said al-Maliki for his contributions. My question to Honorable Foreign Ministers, both of them, is how Saudi Arabia views the ongoing international efforts for ceasefire in Gaza, and secondly, what are the likely consequences of the recent escalation for the peace and stability of the broader region where we all live? Thank you very much. Thank you very much for your question. And what can I say about Gaza except that the international efforts towards a ceasefire have been wholly insufficient. We are now well beyond 33,000 civilians killed.
We are now actively discussing the potential for famine in Gaza. Again, famine. That means people are starving to death because humanitarian assistance is not getting to them. This is an unacceptable situation. It is a complete failure of the international system and the systems of international law and governance to live up to their responsibilities. We must have a ceasefire now, and we must have access for humanitarian aid immediately. There is no justification for the restriction of humanitarian aid in entering Gaza. It is a reality that despite 2 UN Security Council resolutions, we have not seen sufficient aid entering. We have finally now started to see a turnaround in the issue of aid. Unfortunately, that happened after 6 Western aid workers were killed by Israel. But it didn't happen after 33,000 Palestinians were killed. So this shows you the continuing double standard that we have to deal with and we have to live with. The reality is the international community is not living up to its responsibility. We must do more to end the killing. We must do more to end the suffering of the people of Gaza. And we will continue to call for that, and as we will do that with our partners around the world. Look, we are already in an unstable region. The humanitarian catastrophe in Gaza is already inflaming the region. We do not need more conflict in our region. We do not need more confrontation in our region. So it is our position that de-escalation must be everybody's priority. When there are differences, they should be resolved through dialogue, not through the use of force, and we will do everything we can to push in that direction. Thank you. If, with your permission, my dear brother, if I can add few words on this issue. It's a very important issue, and Pakistan is deeply concerned over Gaza issue. I share the feelings, the statement of my dear brother, Highness, the Foreign Minister of Kingdom of Saudi Arabia. We have talked about this subject bilaterally, and I think it is a time that this genocide must end, because 33,000 killings of of Muslim brothers and sisters and small innocent children, this is far too much, and the world conscious must wake up. I think we both agree that what we need is immediate and unconditional ceasefire to take place. We both believe that unimpeded humanitarian assistance to the besieged people of Gaza should go. They should not let them be killed by starvation. In addition to the what genocide there is taking place, there's the return of the displaced Palestinian must also take place, and the accountability of the crimes which have been committed. I mean, we have been seeing the centuries-old and the decades-old crimes are being, investigated, and accountability is undertaken in the recent last few decades. Why not for this genocide crime? So I fully endorse my brother's feeling. Pakistan is deeply concerned. We believe the perpetual solution to this issue will be when Palestinian state is established according to the 1964 resolution with Al-Quds Sharif with its capital. I think that is what is required. It is good for Israel perhaps also, but I think it is need of the hour, and the world community must wake up. You just heard my brother saying that only 6 killings of the Western people woke them up. And we saw some action being taken place, but for months there was no movement. So I share my brother's feeling, and on behalf of Pakistan, on a personal behalf, that this is something I think the world must, act fast and as fast as it can. Thank you. Thank you. I would now ask Mr. Muhammad Ejaz from GNN to pose a question to the Foreign Minister of Pakistan. I would like to ask a question from both the dignitaries here. As you mentioned in your speech earlier about the Pakistani diaspora, I would like to ask the Pakistani diaspora is living in Saudi Arabia for very long, and they are playing a very positive role in the Saudi society and the development.
how Pakistani diaspora can play its role in future strengthening the ties between the both countries. And secondly, I would like to ask my guest foreign minister how Pakistan is facing a challenging situation, and the world is also facing different challenges. How Pakistan and Saudi Arabia will both proceed to overcome these challenges and to face the situation as you have mentioned in Gaza? Well, let me just explain to you that, I again thank His Highness and the Kingdom of Saudi Arabia leadership for hosting our 2.5 million, Pakistanis there, which is 28% of the workforce of Pakistan. And their contribution in the national exchequer through the remittances is tremendous. Is almost 25% of the total remittances Pakistan receives from all over the world from Pakistani expatriates. Number two, I have requested my dear Highness brother that if the kingdom could consider that we have a new policy which has been decided by Prime Minister Shehbaz Sharif, that we would now train our labor force and our human resource export based on skill training, and particularly in different fields. So, the kingdom is coming up with a huge 2030 vision. The vision of the leadership of Kingdom of Saudi Arabia, His Royal Highness the Crown Prince, Mohammed bin Salman. So they are creating a new world in the name of new city. So I have requested that Kingdom may kindly consider. We will meet the standards, we will meet the skill requirements, we will meet more human export, human resource export from Pakistan. So, we have discussed this subject in detail. Would you like to add, Your Highness? Excellency, yes. First on our brothers from Pakistan who live and work in the kingdom. As I told you, Excellency, we are incredibly grateful for the contribution that they make and have made historically to the development of the Kingdom of Saudi Arabia. Our brothers from Pakistan have stood side by side with us for decades now in building our country, and we are very grateful for that, and they are a very important positive contribution to our economy, and they continue to be so, and I'm sure they will continue to be such in the future. And with the initiatives of the government, we hope we can add additional value for both of our countries in that regard. Obviously, as regards facing challenges together, we will have to cooperate, and we will rely on each other's support as we have historically, and we have always overcome the challenges in the past, and we have helped others together and help overcome. Both Pakistan and the Kingdom of Saudi Arabia very much believe in dialogue and cooperation to address the challenges that the world faces. And we will work together to bring others into that mindset and to work into that direction. Thank you. Last question. Because of the time constraints, we have room for only one question, and that would be Ms. Mona Khan from Independent Urdu. Thanks for the opportunity. My question is for the Excellency for Saudi Arabia. Your delegation has received a detailed briefing from on the investment opportunities in Pakistan. So what are the key sectors your investors are looking for? Thank you. Thank you very much. I prefer not any specific sectors, although I will say it was a very broad presentation in several strategic areas. What I will say is that we were very impressed. We were not just impressed by the breadth of opportunities that exist, we were impressed by actually the format. This gave us some very, very significant confidence that we will be able to move forward on those projects that we decide to identify as worthy of investment. Because this new format, a real interagency, intergovernmental approach focused on getting things done, this is something that we were very, very enthusiastic about. So I think for us what was most important was the new approach that we saw. We were already quite confident that Pakistan had significant investment opportunities in a multitude of sectors. So I'm sure that we will be moving ahead significantly on all of those. But I just want to emphasize this new approach is something that gave us a lot of confidence. Thank you. Okay.
Thank you very much. This concludes our media briefing, and we thank His Royal Highness, the Foreign Minister of Saudi Arabia and the Foreign Minister of Pakistan. नून लीग के कायद नवाज शरीफ रोटी की कीमत मालूम करने खुद अवाम में पहुंच गए। नवाज शरीफ ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के हमरा रोटी की कीमत मालूम की। नवाज शरीफ ने अड्डा प्लॉट में नान भाइयों से मुलाकात की और उनसे रोटी की कीमत भी मालूम की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने रेट लिस्ट का मुआयना भी किया। आपको बता रहे हैं कि नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब को खुद में अवाम में देखकर खुशगवार हैरत का इजहार किया। नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने अवाम से उनकी राय भी मालूम की। नवाज शरीफ ने कहा कि रोटी की कीमत का खुद जायज़ा लेता रहूँगा। आपको एक अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि नून लीग के कायद नवाज शरीफ रोटी की कीमत मालूम करने के लिए खुद अवाम में पहुँच गए। नवाज शरीफ ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के हमराह रोटी की कीमतें मालूम की। तो वो एक नंबर है, उस पर रिपोर्ट करनी है, ठीक है। आज कोई रोटी लाए आगे मियां ये दिखाएं जरा। कितने की दे रहे हो? पक्का कल से दे रहे हो? ये कब आया है नोटिफिकेशन? कल आ गया था। और नान कितने का दे रहे हो? जरा दिखाएं 16 वाली होगी। इसको दीवार पे लगाएं, इसको दीवार पे लगाएं। अच्छी होती है। क्या हाल है बच्चों? आगे आओ। आज नहीं खरीदी रोटी? क्या अभी आ रहे हो खाने के लिए? ये लो रोटी 16 रुपए की हो गई। 16 से ज्यादा पैसे नहीं देने, ठीक है। ज़ैन कुरैशी ने मुल्क भर में दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहमी से मुताल्लिक़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है, जिसमें कहा गया है कि ज़ैन कुरैशी MNA हैं और कभी किसी गैर कानूनी अमल में शरीक नहीं हुए। साबिक और निगरान हुकूमत के दौर में गलत और बेबुनियाद मुकदमात दर्ज किए गए। इंतखाबी अमल के दौरान मुकदमात बनाए गए जिसका मकसद लीडरशिप को जेलों में रखना था। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि ज़ैन कुरैशी को उनके ऊपर दर्ज मुकदमात की
तफसीलात फराहम की जाएँ। आपको बता रहे हैं कि दरख्वास्त में सेक्रेटरी दाखिला, FIA कमिश्नर इस्लामाबाद और चारों सूबों के IGs को फरीक बनाया गया है। आपको बता रहे हैं कि ज़ैन कुरैशी ने मुल्क भर में दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहमी से मुताल्लिक़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। इस हवाले से आपको बताएं कि ज़ैन कुरैशी ने मुल्क भर में दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहमी से मुताल्लिक़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। PTI ने मुल्क भर में जलसों के मंसूबे को हतमी शक्ल दे दी है। 21 अप्रैल से बाकायदा जलसों का आगाज़ किया जाएगा। PTI सबसे ज़्यादा जलसे पंजाब में करेगी। ज़राए का कहना है कि पंजाब से जलसों की जिम्मेदारी हम्माद अजहर को सौंपी गई है। PTI पंजाब भर में जलसे करेगी। तहरीक इंसाफ तहफ़्फ़ुज़ पाक आपको बता रहे हैं कि PTI पंजाब भर में सबसे ज़्यादा जलसे करेगी। इस हवाले से इस्लामाबाद से शाकिर अब्बासी, नुमाइंदा कैपिटल TV हमारे साथ मौजूद हैं। तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी शाकिर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर में जलसों के मंसूबे को हतमी शक्ल दे दी है। ज़राए के मुताबिक इस 21 अप्रैल से बाकायदा जलसों का आगाज किया जाएगा। PTI सबसे ज्यादा जलसे जो है वो पंजाब में करेगी। पंजाब से जलसों की जिम्मेदारी हम्माद अजहर को सौंपी गई है कि वो सारी मैनेजमेंट करेंगे। इस हवाले से साथ साथ PTI पंजाब भर में जलसे जो है वो स्टार्ट करेगी। तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान के नाम से बाकायदा तहरीक का आगाज किया जाएगा। वकला की बड़ी तादाद भी तहरीक में शिरकत करेगी। KPK से अलीमीन गंडापुर जो है तहरीक की सरबराही करेंगे। सिंध से अलीम आदिल शेख जलसों की क़यादत करेंगे। बानी चेयरमैन की रिहाई और आइन की मुकम्मल बहाली तक तहरीक जो है वो जारी रहेगी। जी जी शाकिर अब्बासी, आपने तफसीलात से आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। साइफर केस, बानी चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी की अपीलों में समात बुध तक मुलतवी। बानी PTI के वकील सलमान सफदर के दलाइल मुकम्मल। एक ऐसा केस जो वफाकी काबीना और 2 नेशनल एक्शन कमेटी के सामने रखा गया। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सामने भी साइफर के मतन को नहीं रखा गया। साइफर कहाँ है? जब एक चीज़ है ही नहीं तो हवा में मुकदमा बना दिया गया। हमें ट्रायल कोर्ट में जिरह का मौका नहीं दिया गया। आपको बता रहे हैं कि बानी PTI के वकील सलमान सफदर ने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। साइफर केस में बानी PTI चेयरमैन और शाह महमूद कुरैशी की अपीलों पर समात बुध तक मुलतवी कर दी गई है और बानी PTI के वकील सलमान सफदर ने इस हवाले से दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। बैरिस्टर सलमान सफदर कहते हैं कि एक ऐसा केस जो वफाकी काबीना और 2 नेशनल एक्शन कमेटी के सामने रखा गया। इस हवाले से इस्लामाबाद से नुमाइंदा कैपिटल TV हमारे साथ मौजूद हैं शाहजेब मलिक, इस हवाले से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस के हवाले से समाअत हुई है। 2 रुकनी बेंच ने इस केस की जो की है वो समाअत की है। आज जो वकील थे सलमान सफदर, उन्होंने आज अपने दलाइल जो है वो मुकम्मल कर लिए हैं और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA जो उनसे प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह जो उनसे हैं वो कल अपने दलाइल का आगाज करेंगे और उस पर अदालत ने हिदायत भी कर दी है। बानी PTI शाह कुरैशी की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुलशन ज़ैब ने की है और बानी PTI के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने दलाइल देते हुए आज मौक़िफ़ बनाया था कि साइफर आजम खान की कस्टडी में था और आजम खान ने साइफर वसूल किया था, जिस पर अदालत ने इस्तफसार किया कि वज़ीर आज़म या इस तरह की पोजीशन पर कोई डॉक्यूमेंट जो है सेक्रेटरी पोजीशन में हो तो क्या होगा। इस हवाले से बताया गया कि एक चीज़ आपसे मुतफिक हूँ कि एक चार्ज लगना था और सलमान सफदर ने आज मजीद अपने दलाइल में कहा कि बानी PTI का मौक़िफ़ है कि मैंने काफ़ी जो से वसूल की थी मगर दफ्तर से वो गायब हो गई है। पोजीशन ये है कि साइफर काफ़ी जो है वज़ीर आज़म ऑफिस में गुम हो गई थी। यही बात आज़म खान की जब साइफर कॉपी नहीं मिलती थी तो वज़ारत ख़ारजा को आगाह किया जाता था, जिस पर अदालत ने रिमार्क दिए कि साइफर की हिफाजत इसलिए है कि कोई इसे देख ना ले। क्या किसी ने भी साइफर देखा है? जिस पर सलमान सफदर ने बताया कि नहीं, किसी ने साइफर जो है वो नहीं देखा, हत्ता कि मैंने भी नहीं देखा, किसी गवाह ने भी इसके मतन से मुतालिक कुछ नहीं बोला है और आजम खान के बगैर प्रोसीजर के मुल्जिम जो है वो गवाह बनाया गया है और मुल्जिम को बतौर गवाह इस्तेमाल कब कैसे हो सकता है, इसका पूरा प्रोसीजर मौजूद है। बैरिस्टर सलमान सफदर ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं और प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह ने कहा है कि 3 दिन का वक्त जो है वो दरकार है
दलाइल मुकम्मल कर लेंगे तो अदालत ने FIA प्रोसिक्यूटर हामिद शाह को जो है कल से दलाइल का आगाज करने की हिदायत करते हुए केस की समाअत जो है कल तक के लिए मुलतवी कर दी है। जी शाहजेब मलिक, नुमाइंदा कैपिटल TV इस्लामाबाद से आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद कराची के शहरी इस पर क्या कहते हैं। गुज़श्ता रोज़ पेट्रोल की कीमतों में 4 रुपये और डीज़ल की कीमतों में 8 रुपये इजाफा किया गया था, जिस पे कराची की शहरी जो है वो सख्त नाला है। लेकिन उनसे जानते हैं उनका मौक़िफ़ पेट्रोल की कीमतों पे क्या है। आइए। पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि इस पर गौर करे और गरीब आदमी को रिलीफ दे। यार ये तो मैं इसमें सिर्फ जो है ना हमारे खान साहब थे जो हमें रिलीफ दे रहे थे। 150 रुपये लीटर उनके टाइम पे था, 100 रुपये से 150 पे गया। लेकिन यहाँ तो कहानी उल्टी चल रही है, डबल कर दी है, 294, 290, बीच में 330 पे भी गया था। तो ये तो बाइक चलाने भी हमारी बजट से बाहर हो रहा है, मतलब कहने का ये। पेट्रोल जो है ना बड़ा महंगा किया हुआ है, इसके लिए गरीब लोग जो है ना पेट्रोल कहाँ से डालें। हम लोग जो अभी दूर से सफ़र करते हैं, हम अपनी जो है ना तनख्वाह पूरी करें, बच्चों की पूरे करें, ट्यूशन पूरे करें या मदरसों के बच्चों की फ़ीस पूरी करें। पेट्रोल बहुत ही हद से महंगा हो गया। अब वक्त ऐसा आ जाएगा जो गाड़ियाँ जो है ना घरों में खड़ी हो जाएंगी और गरीब आदमी के बस की बात नहीं है। अमीर तरीन लोग हैं, उनकी कोई फ़िक्र नहीं है, घरों में बैठे हुए हैं, उनको माल मिल रहा है। गरीब आदमी क्या कर सकता है? गरीब आदमी कुछ भी नहीं कर सकता है। अगर कोई फरियाद करे तो उनको एहतजाज भी करने नहीं देते हैं, और उनको पकड़ लेते हैं और कहते हैं इनको लाकअप में बंद कर दो। गरीब आदमी का एक ही बस की बात है, वो है एहतजाज भी करनी चाहिए। हुकूमत से अपील ये की जाए कि पेट्रोल सस्ता जाए और खाने पीने की अशिया जो है उसको कमी की जाए ताकि गरीब आदमी का गुजारा किया जाए। ये तो बड़ी मुश्किल वाली बात है आम आवाम के लिए कि पेट्रोल की कीमतों का कोई मतलब अंदाज़ा नहीं कि कितनी लिमिट तक ये बढ़ेगा और कितना बढ़ेगा, कभी कम हुआ नहीं, सिर्फ ये बढ़ता रहता है। ये आम लोग इससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। भाईजान, हमें तो अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि हमें कोई भी हुकूमत कोई भी हमें फैसिलिटी नहीं दे रही। ऊपर से हम पेट्रोल पे बम गिराते जा रहे हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ाते जा रहे हैं। हम इतने मजबूर हो गए, हम गाड़ियां बेचने लगे, हम दूर दूर तक पैदल सफ़र करने लगे। और क्या अब कहना चाहिए, जो आवाम आ रही है, जो हुकूमत आ रही है, वो आवाम को बेवकूफ़ बनाते जा रही है। हम पेट्रोल कम करेंगे, इजाफी पेट्रोल बढ़ाते जा रहे हैं, कोई एहसास नहीं है। इतनी गुर्बत पाकिस्तान में हो गई है, अफसोस से कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान की आवाम खुदकशी पे मजबूर हो गई है। पेट्रोल की कीमत में क्या कहेंगे, गवर्नमेंट तो बिल्कुल बेखबर है कि आम आदमी का क्या हाल है। वो गरीब से गरीब तर, सफ़ेद पोश को भी गरीब से गरीब तर नीचे ले आई, बिल्कुल ज़मीन से लगा दिया। बस अब मारना बाकी रह गया और तो कुछ भी नहीं कह सकते। जी बिल्कुल, कराची के शहरियों का यही कहना था कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद जो है महंगाई में भी इजाफा हो सकता है, और जो हुकूमत ने वादे किए थे कि रिलीफ दिया जाएगा, लेकिन बाज़ार इस वक्त रिलीफ नज़र नहीं आ रहा। हुकूमत के आने के बाद 2 दफ़ा पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई गई हैं, जिसके बाद कराची के शहरियों का ये मुतालबा है कि शहबाज शरीफ जो पेट्रोल की कीमतों को कम करें ताकि महंगाई भी कम हो सके। जी।